For more videos, subscribe our channel and press the bell icon on the YouTube app. I just can't wait to spend a little bit of time with you guys and celebrate this moment. The most popular singer Armaan Malik. Hi everyone, this is Armaan Malik. अरमान जी को 13 years हो गए जब से उन्होंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया है. 13 years of me being a playback singer, being a part of this music industry. 13 years since I sang my first song in a recording studio. उन्होंने इस मेजर करियर मोमेंट को सबके साथ शेयर किया. I have no words. I just can't believe. इस खुशी को वो सोशल मीडिया पर अपनी अरमानियंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. I just thought that I want to spend this day with my fans, my Armanians. तो ये रहा उनसे पूछे गए सवालों के जवाब. So yeah, ask me whatever questions you have and I'm here to answer them. इतने सालों में आपको मिली हुई सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? My biggest award, my biggest achievement is you guys. I am whoever I am today. It's all because of my Armanians, my amazing fans who have supported me since day one. I love you guys and कहीं मत जाना, okay? इस मुकाम पे आके कुछ साल पहले के अरमान को आप क्या कहेंगे? Be very patient. He's been patient, like you all know. But I would just tell him, धीरज रख बेटा, बहुत बहुत सारी चीजें होने वाली है जो तू कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा. That's what I wanted to say to little Armaan. आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? I want to be able to show off my six-pack abs in 2021. So that's my New Year resolution. I'm going to sculpt my body and make it look ripped. Let's hope it goes to plan. आप खुद में क्या चेंज लाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, पुंज जैसा है, झक्कास है. क्रिसमस एंड न्यू ईयर की प्लानिंग क्या है? मस्त तेल में मछली को फ्राई करके खा के सो जाएगा. ये अपन का बाबा एम वाला स्टाइल है. आपका रिएक्शन क्या था कि आपने 13 इयर्स पूरे कर लिए? हाँ? क्या ऐसा भी होता है? बम बम बोले से लेकर हाउ मेनी तक आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं. तो कैसा लग रहा है आपको? ये आपका स्टूडियो है ना? तो आप ट्रिप से वापस आ गए? My trip was like go and आ. उतना ही छोटा था. जितना गोवा है ना, उतना सही. आपके सक्सेस मंत्र क्या है? ओए. डिफरेंट लैंग्वेज में गाने के लिए आपको किसने एनकरेज किया? My mom, she literally pushed me to sing all these different languages. She was always saying, try Tamil, try Telugu, try Malayalam, try Kannada, try Bengali, Gujarati, everything. So, I mean, at first I was like, wait mom, I don't know all these languages, why are you forcing me to do all this? She was like, no, you learn, it'll be good for you. So everyone needs a Jyoti Malik in their life. आपकी जर्नी का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है? The best moment from my journey would definitely be my performance with my dad on the SSC Arena Wembley stage in London. I brought him on stage and we sang a few songs. And that moment was priceless. One of the best moments of my life. क्या ऐसी चीज है जिनके बारे में आप सुपरस्टिशियस हैं? I'm very superstitious. So when I'm doing a concert, I prefer to have my lyric stand on my left and my guitar stand and my guitar on the right. And if it isn't in that format, I feel like the show won't go well. So yeah, that's me. हैंडसम से कब मिलवा रहे हैं? Okay, let's go meet Handsome. He's probably sleeping. I don't want to disturb. Oh, he's not sleeping. Wait. Hi, Handsome. My fans want to meet you. Say hi. Hi, baby. Say hi. Hi, Bubzu. No? No hi? You want to sleep again? He's snoring. क्या ये डॉगी है यार? आपको पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंटर करते वक्त कैसा लग रहा था? I remember my first recording for a Bollywood film. It was Tari Zameen Par. The song was Bum Bum Bole, and there were
legends in the room. Shankar Ehsaan Loy, Amir Khan sir, and there were other kids as well who had already sung a lot of film songs before me, and this was my debut as a playback singer. So I was pretty clueless about what to do in the studio, but I was learning on the go. Q&A वीडियोस शूटिंग के दौरान आपने कितनी बार रीटेक ली है? How many, how many? एज अ ब्रदर आप अमाल मलिक को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं? कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। अब तक के गाए हुए कौन सा गाना आपके दिल के बहुत करीब है? मुझको न रहना साथ मेरे ले जा। आपके एल्बम अरमान से एक गाना गा दीजिए। तेरे बिन नहीं जी लूंगा मैं। एक सॉन्ग जिसे आप अपने अरमानियंस को डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। कौन सा गाना आपको लगता है सबसे टफेस्ट था? यारिंदे मुयल कुट्टी तीवलेरी मूंग काडल रजाई मरंदा बट्टा भूल गया लिरिक्स। अगर हो सके तो मेरे बडी के 2 लाइन्स गा दीजिए। चलो करें कुछ मजा, थोड़ी शरारत, कुछ शैतानी, काम कोई गड़बड़ का। कौन सा सॉन्ग आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है? 100 बातें करता ये बुद्धू सामन है, नन्ना नन्ना ये, नन्ना नन्ना ये, नन्ना नन्ना ये बुद्धू सामन है। हो सके तो हमें अपनी स्टूडियो दिखा दीजिए। This is my special mic, the Manly mic. That is the iMac and the Genelec speakers. It's pretty much the studio. There's ring lights, mic, amp, chair, stools, guitars, more guitars. Yeah. म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन करते टाइम क्या आपने सोचा था सिर्फ 13 इयर्स में इतना कुछ करेंगे? I don't think anyone can predict what they will achieve in their career. Everything happened so quickly for me, so early on for me. I think it took some time for me to accept the fact that I'm achieving all that I am achieving at this age and so early on in my career. But it's unreal. I really love what I do and I love my fans. You guys are the best. आपके अब तक के टॉप 5 सॉन्ग्स? I think Intezari, Barfani, Sirf Tu and Aulia. These are 4 songs of mine that I feel are really underrated. They have a little bit of this classical touch that not a lot of people associate with me and my singing. But I want people to know that this is a side of mine and that I can sing these kind of songs. A lot of people don't know that. So spread the word. इन 13 इयर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए कभी चेंज नहीं हुआ? The one thing that hasn't changed in all these years is that I haven't stopped learning. I'm always striving to be a better singer every day, always listening to new vocalists, learning new styles and never letting myself be complacent. फिर फैंस के कहने पर उन्होंने एक सेल्फी भी शेयर किया है। Okay guys, that's it for today. It was so much fun chatting with you guys. Today is a really special day for me and I'm so glad that I could spend it with you guys. Lots of love. See you again. And that's my time with you guys. Hope you had as much fun as I did. See you soon. तो आगे भी कई सारे वीडियोस को एंजॉय करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलना।